issue a red notice alert for Sheikh Hasina. What does that mean? A red notice is basically a request to Interpol's member nations. If a suspect is in your country, try to arrest them or make them surrender. यहाँ जी अब शेख हसीना को इंटरपोल अरेस्ट करने के लिए इंडिया जाएगा। शेख हसीना को इंडिया से अरेस्ट करके बांग्लादेश लाया जाएगा। यहाँ पे वो तमाम लोग जो ये बातें कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शेख हसीना जो है वापस बांग्लादेश की गवर्नमेंट में आ जाएंगी और बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ होगी, बट यहाँ पे जितने केसेस शेख हसीना के अगेंस्ट बन चुके हैं और वो बिल्कुल वैलिड भी हैं, तो अब यहाँ पे बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर इंटरपोल को नोटिस जारी किया है, नोटिस भेजा है कि शेख हसीना को इंडिया से अरेस्ट किया जाए। अब इंटरपोल पुलिस जाएगी इंडिया और शेख हसीना को अरेस्ट करेगी। अब वहाँ यहाँ पे वो कंट्री जो हमेशा बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बिल्ड करती थी, अब बांग्लादेश की वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। और यहाँ पे शेख हसीना की क्या सिचुएशन है ये तो यार अब उसे पता होगा, जाहिर सी बात है। जो सिचुएशन है इस टाइम पे उसकी होनी भी चाहिए। वेल, बिना टाइम वेस्ट के पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया की क्या रिपोर्ट है, क्या कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। इस मेरे न्यू चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। Now let's turn to Bangladesh. The chorus is growing for Sheikh Hasina's arrest. Courts have already ordered it, but Hasina remains in a safe house in New Delhi. So what is Dhaka doing? It is seeking Interpol's help. Now, Interpol, as you know, is a global policing organization. They have around 200 member nations and regions. Bangladesh's interim regime wants Interpol to step in, to issue a red notice alert for Sheikh Hasina. What does that mean? Very well a red done. notice is basically a request to Interpol's member nations. If a suspect is in your country, try to arrest them or make them surrender. In this case, that suspect is Sheikh Hasina. A Bangladeshi court has already issued a warrant for her arrest, so technically Interpol can step in. Having said that, this is an ousted prime minister. The cases against her have a political dimension, so it's not clear if Interpol will help. Which brings us to India. What will New Delhi do if a red notice is issued? Well, a red notice is not an international warrant. Interpol says that countries can make up their own mind as to how they want to respond, and India will not be legally bound by it. But a bigger worry is the public sentiment in Bangladesh. You see, Sunday was a big day. November 10th marks Democracy Day in Bangladesh. On that day in 1987, protests broke out against dictator Irshad. The trigger? The death of an Awami League worker, a member of Sheikh Hasina's political party. And since then, November 10th has been Democracy Day in Bangladesh. So on Sunday, the Awami League tried to hold a rally, sort of like a comeback attempt. Look at what happened next. Student protesters and BNP workers flooded the streets. BNP is Bangladesh Nationalist Party, Khaleda Zia's party, one of the biggest political parties in the country. Together, they swarmed the streets of Dhaka. So the Awami League rally could not really happen. Before that, on Friday, the BNP held another rally, this one with a dark tone. It featured a woman dressed in Sheikh Hasina's attire. She was locked inside a cage. Take a look at this. यार ये क्या है? शेख हसीना जैसी लग रही है यार, ये कौन सी कार्टून है? So much for a new Bangladesh. These protesters are not interested in moving on. They're hanging on to the past. And what about their new leader, Mohammed Yunus? Well, he is enabling all of it. Yunus's advisors have removed Sheikh Hasina's father, Mujibur Rahman's portrait from the presidential palace. Remember, Sheikh Mujib is not just Hasina's father, he is also the founder of Bangladesh. Yet the new leaders of Dhaka disrespect him. Look at what Yunus's minister wrote. The photo of Sheikh Mujibur Rahman, the post-1971 fascist, is removed from Darbar Hall.
It is a shame for us that we couldn't remove his pictures from Banga Bhavan after the 5th of August. The security situation is also deteriorating. Last week, Bangladesh's Human Rights Commission resigned. The commission had 6 members, including a chairman. All of them quit together. Do you know why? Likely because of pressure from Yunus. Their recent report talked about rising violence in the country. Mob attacks, rapes, beatings. This is what they mentioned in their report. And weeks later, all of them had to quit. Is this the reform that Muhammad Yunus promised? A complete realignment of Bangladesh's identity, an erasure of its past? And if so, what is the global community doing about it? Until now, Yunus had an ally in Washington, D.C., US President Joe Biden, but Trump's victory has flipped that equation. You see, Yunus is a prominent supporter of the Democrats. In 2016, he supported Hillary Clinton's campaign. His Grameen Bank donated between $100,000 and $250,000. His Grameen Research donated between $25,000 and $50,000 to the Clinton campaign. When Trump won, Yunus was heartbroken. Listen to his comments. Trump's win has hit us so hard that this morning, I could hardly speak. I lost all strength. Should I even come here? Of course, I should. We must not allow this lapse into depression. We will overcome these dark clouds. Now, you know Donald Trump, he's the sort of person who holds a grudge. We saw that after he won the 2016 election. A Bangladeshi delegation visited the US after his win, and this is what Trump asked them. Where is the microfinance guy from Dhaka? I heard he donated to see me lose. Well, that microfinance guy is now ruling Bangladesh. So will Trump put pressure on him, or will he follow Biden's policy? A lot really depends on how the transition goes. I'm sure the US security establishment has long-term plans for Dhaka, especially with respect to China and India. They will relay these plans to Trump's team. If they like it, he may stick to the policy. If not, he may ramp up the pressure. But India cannot just rely on Trump to address its concerns in Dhaka. That assumption itself is a surrender of India's influence. ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है. Bangladesh interim government once again has submitted a Interpol की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट की गई है और यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि जो रेड वारंट है वो इशू होंगे और इसी चीज़ को लेके जो है इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है. वेल यहाँ पे इंडिया अगर काफ़ी अच्छा है तो आई थिंक उनको आराम से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए. बट यहाँ पे जो कि इंडिया काफ़ी लंबे समय से शेख हसीना के साथ जुड़ा हुआ था एंड देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी सीक्रेट्स, काफ़ी सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, राज हैं तो उसने शेख हसीना के साथ रखे हुए हैं एंड आई डोंट नो वो किस चीज़ का कर्ज चुका रहे हैं. ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे मफादात भी हैं इंडिया के जिसकी वजह से उन्होंने स्टिल शेख हसीना को रखा हुआ है. बट यहाँ पे बांग्लादेश वंस अगेन जो है इशू किया गया है इंटरपोल को कि शेख हसीना को अरेस्ट करके बांग्लादेश लेके आया जाए. और यहाँ पे जो इंटरपोल है उसकी जो लॉज हैं, उसके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं. यहाँ पे कोई भी ऐसा क्रिमिनल जो ऐसे किसी दूसरी कंट्री में पनाह लेके बैठा हो उसे इंटरपोल के थ्रू जो है वापस कंट्री के अंदर लेके आया जा सकता है. यही वजह है कि यार इंडिया की जो सांसें हैं वो फूली हुई हैं एंड इंडियन गवर्नमेंट जो है बुखलाई हुई है कि अब हम क्या करें. एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किल सूरत हाल है वो बनी हुई है. वेल यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार डोनाल्ड ट्रंप आ गया है तो वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. वेल ऐसा डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मोहम्मद यूनुस को अमेरिका नहीं लेके आया बल्कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के स्टूडेंट्स बहुत भरे रेवोल्यूशन के बाद उसको लेके आए हैं. एंड यहाँ पे जो रेवोल्यूशंस हैं उनको इतनी आसानी के साथ यार हटा देना, रिमूव कर देना इज़ नॉट दैट ईजी. अगर मोहम्मद यूनुस को हटाया जाता है तो यहाँ पे यार जो स्टूडेंट पहले इतनी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, क्या किसी को लगता है कि यार वो स्टूडेंट चुप रहेंगे? क्या किसी को लगता है कि वो स्टूडेंट्स अपनी जान पे खेल के दोबारा अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान नहीं कर सकते? अगर किसी को यार ये लगता है तो आई थिंक उसको अपनी जो गलत फहमी है ना उसको ख़त्म कर देना चाहिए. बिकॉज मोहम्मद यूनुस स्टूडेंट्स के चूज़ किए हुए बंदे हैं एंड मोहम्मद यूनुस इज़ वेरी इंटेलिजेंट
बहुत बहुत ज़्यादा अहम ख़ास बंदे हैं। अब अमेरिका के साथ रिलेशंस अच्छे रखना, बांग्लादेश के चूँकि अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे भले ही शेख हसीना हो, भले मोहम्मद यूनस हो, बांग्लादेश ने अपने रिलेशन यूएस के साथ अच्छे रखने ही हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे यार, शेख हसीना कब अरेस्ट होंगी, कितने दिन और हैं कि बांग्लादेश इंतज़ार करेगा, एंड मज़ीद स्टेप्स जो हैं बांग्लादेश कौन से ले सकता है, आप लोग क्या कहेंगे? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।